Hello students, welcome you all on behalf of Resonance, myself Srinivas Naidu, SRN sir. आज हम 28 जुलाई शिफ्ट 1 की पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर केमिस्ट्री की देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट था एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली n and l। इट इज रॉन्ग। क्यों? ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n, l and m, तीनों से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, बोर्स मॉडल एक्सप्लाइंस फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी गलत है। बोर्स मॉडल ओनली सक्सेसफुली एक्सप्लाइंड द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बट नॉट फाइन स्पेक्ट्रम। फाइन स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिटिंग हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और वो फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया है, ये ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल है। सो ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिटल प्रपोज्ड बाय बोर, इट इज सर्कुलर ऑर्बिट है, नॉट ऑर्बिटल। सो ये भी गलत है। Next, an orbital, atomic orbital is the wave function psi for an electron in an atom. Yes, it is, orbital is represented by the wave function, and this wave function is the amplitude of the wave only. So the fourth statement only correct. Next one, which of the following have least tendency to liberate hydrogen on reaction with acidic solution? So this is question from electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट्स दैट इज मेटल्स है वो एसिड्स और वाटर से रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता है। सो हाइड्रोजन के नीचे कौन सा मेटल्स होगा? कॉपर इज द ओनली मेटल दैट इज प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन एंड इन द गिवन वन, and iron, nickel and manganese are above the hydrogen in the electrochemical series. So इसमें कॉपर हाइड्रोजन एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता है। इसमें आप पोटेंशियल देख सकते हैं, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 volts, फॉर आयरन इट इज -0.44 volts, and for nickel it is -0.2 volts, and for hydrogen it is 0.0 volts. That means हाइड्रोजन के ऊपर ये आयरन एंड निकल मेटल्स आएगा एंड हाइड्रोजन के नीचे कॉपर मेटल आएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हायर नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू को हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। इसमें मैचिंग करना है। ये जुलाई सेशन में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया है रिगार्डिंग दिस कैटलिस्ट। लुक एट दिस, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू NH3। इसके लिए कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करेंगे? आयरन इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज द प्रमोटर। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO3। दिस इज, in this NO, that is nitric oxide, can be used as the catalyst, or vanadium pentoxide. Next, sucrose gives glucose and fructose. In acid medium it undergoes hydrolysis and giving glucose and fructose. In this H2SO4 is used as the catalyst, and ammonia on oxidation giving nitric oxide. In this platinum is used as the catalyst. So this is the matching for this question. Next, which of the following have square pyramidal geometry? Square pyramidal geometry हम आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके लिए हम
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के हिसाब से स्क्वायर पिरामिड किसका होगा। सो चलो हम एक बता रहा हूं, पहले वाले CLF, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 14। सो इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 1s आर 8 एंड 6 रिमाइंडर 2 से फिर डिवाइड कर रहे हैं। सो 1 plus 3 that is 4. So this represents, some of these quotients represents the steric number, और इसमें पहले वाले आपको बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाले लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब CLF में 3 लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है, और क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट वन BRF5, in this also you can calculate total valence electrons, that is ब्रोमीन एंड फ्लोरीन दोनों 17th ग्रुप का है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा दोनों में, सो 6 into 7 42. If you divide this with 8, 2 remainder, again divide with 1, it is 0 remainder. First quotient represents bond pairs, second quotient represents lone pairs. That means BRF5 is having 5 bond pairs and 1 lone pair, and it is sp3 d2 hybridized. So in the sp3 d2 hybridized, bromine is having 5 bond pairs and 1 lone pair, and this shape is said to be the square pyramid shape. It is square pyramid shape. And CLF5 same as BRF5, it is also having square pyramid shape, and IF5 is also having same square pyramid shape. Now BRF3, in BRF3 let us see 28 valence electrons. In these 28 valence electrons, 8 3s 24, 4 remainder and divide with 2. Then first quotient represents bond pairs, second quotient represents lone pairs. That means total electron pairs in this valence shell are 5. The 3 bond pairs and 2 lone pairs are present. Now if there is 2 lone pairs and 3 bond pairs, its shape will be equal to T shape. BRF3 shape will be T shape, and ICL3 is also having the same shape, that is T shape. It is T shape. It is also T shape. Next I2Cl6. I2Cl6 is having the structure like this. It is square planar structure. इसमें ICl3 dimerize हो जाएगी. In this ICl3, one chlorine is donating the lone pair to the iodine, and here in the ICl3 one chlorine is donating lone pair to this, and here iodine is having 2 lone pair, it is having 2 lone pair on each iodine, and it is sp3 d2 hybridized and square planar structure, sp3 d2 hybridized and square planar structure. Now the answer for this is this BRF5 square pyramid and CLF5 is square pyramid, IF5 is also square pyramid. So these 3 molecules are having square pyramidal shape. So answer is 3. You can see the shapes for these molecules. Next one, it is from ionic equilibrium.
pH of 0.2 molar butyric acid is given 2 into 10 power pH कैलकुलेट करना है और इसमें Ka वैल्यू गिवन है 2 into 10 power minus 5, log 2 वैल्यू इज आल्सो गिवन और pH को हम x into 10 power minus 1 के टर्म में एक्सप्रेस करना है, x वैल्यू कितना होगा। इसमें वीक एसिड के लिए pH इक्वल टू फार्मूला हाफ इंटू pKa माइनस log C। इसमें Ka वैल्यू इज गिवन, it is 2 into 10 power minus 5, pKa value will be equal to minus log 2 into 10 power minus 5, it can be equal to 5 minus log 2, it is 5 minus 0.3, 4.7। So ये pKa value 4.7 ऐसा आ गया और log C concentration is given as 0.2 molar, we can write it as 2 into 10 power minus 1 and now on solving this you will get pH equal to 2.7 and this 2.7 can be written as 27 into 10 power minus 1. So, x value here it can be 27. Next question, K2MnO4 on disproportionation in acidic medium give two products of Mn, A and B. The oxidation state of B is less than that of A, then find magnetic moment spin only of B. अब इसमें ये क्वेश्चन हर पेपर में आ गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की KMnO4 रिएक्शन से ये क्वेश्चन हर पेपर में अभी तक जितने पेपर्स हुआ है हर पेपर में ये क्वेश्चन है और इसमें देख लो K2MnO4 में एसिड मीडियम में MnO4 माइनस और MnO2 ये प्रोडक्ट्स देगा और इसमें +7 एंड +4 ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है और एज +7 एंड +4 इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट हो गया MnO2 और इस MnO2 की मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो MnO2 की मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इन MnO2 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इज +4 और इट इज हैविंग 3d3 कॉन्फ़िगरेशन एंड इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 3. So magnetic moment can be calculated as root over n into n plus 2 bm. Number of unpaired electrons 3 into 3 plus 2 and it can be root over 15 bm. If you do that square root you will get 3.87. It is nearly 4 bm. It is nearly 4 bm. So answer can be 4. Which set of elements almost have same value of electron gain enthalpy? इसमें रुबिडियम, सीजियम, एस्ट्रेटिन, आयोडीन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, सोडियम, पोटेशियम इस तरह दिया है और इस पेयर्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका सेम है, ये डेटा बेस्ड है ऑलमोस्ट। इसमें आप देख सकते हैं रुबिडियम, सीजियम के लिए द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज 46 किलो जूल पर मोल एंड एस्ट्रेटिन एंड आयोडीन के लिए 233 एंड 296 एंड क्रिप्टन एंड आर्गन के लिए 96 एंड सोडियम एंड पोटेशियम के लिए 53 एंड 48 किलो जूल पर मोल। अब इसमें सेम सेट किसके लिए सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ऑलमोस्ट सेम, दैट कैन बी रुबिडियम, सीजियम एंड क्रिप्टॉन, आर्गन। ये सेट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है, so answer can be A and C. Now this is a question from chemical bonding related to MOT. How many of the following species are paramagnetic in character? ये क्वेश्चन भी ये जुलाई सेशन में 2-3 बार आ गया है और इसमें B2, He2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस, C2, O2 माइनस ये दिया है और इन स्पीसीज में हमको ये देखना है जिसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसमें देख लो ये He2 प्लस, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड B2 इसके कॉन्फ़िगरेशन देख लो, B2 में देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट C2 देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and in C2 minus there is one unpaired electron. Next in O2 plus
one unpaired electron. So, these three are having B2, He2 plus and O2 plus and C2 minus. These are having unpaired electrons, that is why these are paramagnetic. So, 4 species are having unpaired electrons, so these are paramagnetic. Next one, identify incorrect relation from the following. इसमें डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा PV दिया है, ये तो गलत रिलेशन है. डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिखेंगे. सो ये फर्स्ट रिलेशन ये गलत है. और डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इट इज करेक्ट. And delta S system plus delta S surroundings greater than or equal to 0, it is also correct. Entropy of the change in entropy of the universe is always positive. Next, delta U equal to Q plus W, a first law of thermodynamics की relation है. So ये remaining 3 are correct है, केवल first one गलत है. Next, Clark's method is used to remove temporary hardness of water. Which of the following products are formed during this process? इसमें temporary hardness causing salts, that is calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. ये salts को remove करने के लिए calcium hydroxide add करेंगे, तब इसमें कौन सा products बनेगा? इसमें calcium carbonate and magnesium hydroxides are formed as the products. So ये products के बारे में पूछा है, तो आंसर calcium carbonate and magnesium hydroxide. These are the products formed in this Clark's method. Next question, this is from solid state. A metal crystallizes in BCC structure with edge length of unit cell, edge length 300 pm picometer. If density of solid is 6 gram per cc, then number of atoms present in 180 grams of solid is. इसमें डेंसिटी दिया है, हमको ये एज लेंथ भी दिया है, इनसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं मोलार मास. नाउ मोलार मास इज, by putting the data you will get molar mass as 48.762. इसमें Z value क्या है? Number of atoms per unit cell. For BCC, number of atoms per unit cell will be 2. So Z value can be 2. And Na means Avogadro's number, और इसमें volume of the unit cell, that can be A cube. A cube means edge length cube. You can substitute here 3 pm. It is in angstrom units. You can write it as 3 into 10 power minus 8 centimeters whole cube. Now on solving, molar mass you will get 48.762 grams. Now number of atoms in 180 grams पूछा है. So number of atoms in 180 grams हम कैसे calculate करेंगे? ये 48.762 means molar mass है, that is Avogadro number of atoms, that is 6.023 into 10 power 23 atoms की mass है 48.762. अब 180 ग्राम्स में कितने एटम्स होगा ये कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा 22.22 इंटू 10 पावर 23. सो ये हमको x इंटू 10 पावर 23 फॉर्म में दिया है. सो x वैल्यू बताना है हमको 22. नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स. हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है. Then find the ratio of initial concentration to final concentration after 2 minutes. It is very simple question. इसमें आपको C0 to CT की ratio, that is initial concentration C0 and CT means initial concentration after time t, concentration after time t, इनकी ratio बताना है. So ये T half दिया है 0.693 by K, और इनसे K कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. K कैलकुलेट किया तो 2.303 मिनट इनवर्स आएगा. नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज द रिलेशन Ct इक्वल टू C0 इंटू ई पावर माइनस KT. इनसे हम C0 बाई CT इस फॉर्म में लिख रहे हैं. देन यू आर गेटिंग ई पावर ln 10 स्क्वायर. दिस वैल्यू कैन बी इक्वल टू 100. सो द रेशियो विल बी
equal to 100. This is from S block elements. Which of the following statements is incorrect? Lithium fluoride is soluble in water due to less hydration enthalpy. गलत है ये statement. क्यों? Lithium fluoride is less soluble because of more lattice enthalpy, but not less hydration enthalpy. That's why this statement is wrong. Sodium has higher density than potassium. Yes, potassium is having lower density than sodium because of its larger volume and more vacant orbitals. Next, KO2 is paramagnetic. Yes, potassium superoxide is paramagnetic due to presence of unpaired electron. Next, the sodium solution in liquid ammonia, that means when sodium reacts with liquid ammonia, it forms the ammoniated electrons, and these electrons are responsible for the conductivity of the solution. So, this is also correct. नेक्स्ट वन, ये मैचिंग टाइप है. यहाँ आपको सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल से डायरेक्ट ये रिएक्शंस दिया है. जिंक एमालगम एंड mercuric ऑक्साइड is giving zinc oxide plus mercury. This is related to primary cell. प्राइमरी सेल में ये रिएक्शन होता है. बटन सेल बोलते हैं ना अपन, रिस्ट वॉचेस में यूज करते हैं, वो सेल्स में ये रिएक्शन हो जाएगा, जिंक एमालगम एंड mercuric ऑक्साइड. नेक्स्ट, सेकेंड रिएक्शन, दैट इज lead plus lead oxide in presence of sulfuric acid is giving lead sulfate plus 2H2O. This is during discharging of the reaction of secondary cell. secondary cell reaction, secondary cell में ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है. रिचार्जिंग में, चार्जिंग में क्या होगा, इसके रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी. चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग यू कैन से द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट, H2 plus O2 is giving 2H2O. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्यूएल सेल. फ्यूएल सेल में ये रिएक्शन होगा, कंबशन ऑफ दिस हाइड्रोजन and it will give you the water, and that energy is converted into, the combustion energy is converted into electrical energy. This is taking place in the fuel cell. Next, Cd plus 2NiOH thrice nickel hydroxide. This reaction is taking place in secondary cell, that is rechargeable cells होता है ना, उसमें ये reaction होता है. So, this is the matching type question. This is from electrochemistry. Next one, another matching question. Reactant दिया है, gas released on heating reaction. इसमें ammonium dichromate, on heating it will give nitrogen gas, and MnO4 minus and Cl minus chloride ion and potassium permanganate reaction will give you the chlorine gas. Aluminum and sodium hydroxide reaction will liberate hydrogen gas. Sodium nitrate liberate oxygen gas. So, इसमें ये मैचिंग करना है, ये गैसेस रिलीज्ड दिया है और ये रिएक्टेंट्स है, इनसे हम इसको मैचिंग करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन. 1 mole of X and 1 mole of Y and 0.05 mole of Z on reaction gives XYZ3, then yield of XYZ3 in grams is. इसमें लिमिटिंग रेडियंट फाइंड करना है. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मोल्स लिख रहे हैं, और इसमें लिमिटिंग रेडियंट फाइंड करेंगे, मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे, और जिसका वैल्यू कम आएगा वो लिमिटिंग रेडियंट होगा. सो ये Z इज लिमिटिंग रेडियंट है. इसमें Z लिमिटिंग रेडियंट है, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ X रिएक्टेड है ये कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने बचेगा. सो रिएक्टेड इज 0.05 by 3 moles and left is 1 minus 0.05 by 3 moles of X. और Y कितने मोल्स बचेगा, सेम 1 minus 0.05 by 3 moles of Y left. और कितने मोल XYZ3 बनेगा, दैट इज 0.05 by 3 moles of XYZ3 बनेगा.
हमको मोलार मास ऑफ XYZ3 दिया है, एटॉमिक मासेस दिया है, तो हम मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 120। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XYZ3 मालूम है, सो मास कैलकुलेट कर रहे हैं, मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। इसमें COEN twice NCS SCN plus और COEN twice NCS twice plus, ये दोनों स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है और इसमें ये कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल 3 आइसोमर्स मिलेगा। इसमें सिस आइसोमर विल शो डेक्स्ट्रो एंड लीवो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एक अनदर ट्रांस आइसोमर भी मिलेगा, टोटल 3 आइसोमर्स मिलेगा। और सेकंड कॉम्प्लेक्स का भी सेम 3 आइसोमर्स मिलेगा। सो टोटल आपको कितने आइसोमर्स मिलता है? 6 आइसोमर्स मिलेगा फ्रॉम दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस। An organic compound is formed by carbon, hydrogen and oxygen, and 0.462 grams of this compound on complete combustion give 0.7938 grams of CO2 and 0.4428 grams of H2O. Then percentage of oxygen in the compound find करना है। तो पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करके टोटल मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करके टोटल मास ऑफ द कंपाउंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये 0.462 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 0.7938 ग्राम और वाटर मिल रहा है 0.4428 ग्राम। और इनसे हम मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया है, देन यू विल गेट 0.2165 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 0.0492 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये दोनों मास सब्ट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजन के मास आएगा। सो ऑक्सीजन के मास कितना मिल रहा है? 0.1963 ग्राम्स मिल रहा है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, देन यू विल गेट 42.48%. If you report the answer to nearest integer, it can be 42. Next one, when 10.2 grams of ascorbic acid, gram molar mass 176 gram per mole, is dissolved in 500 grams of acetic acid, then depression in freezing point is x into 10 power minus 1 Kelvin. The value of x is, ये solution colligative properties के क्वेश्चन है, इसमें depression in freezing point के related question. Now the direct data substitution, delta TF equal to KF into M, that is depression in freezing point delta TF equal to KF into M. KF value is given 3.9. M means molality. Molality can be calculated as weight of solute by molar mass of solute into 1000 by weight of solvent. On substituting the data, you are getting 4.52 into 10 power minus 1 Kelvin, and if you report the answer to nearest integer, it can be equal to 5. Now, the last question, which of the following reaction is involved in leaching process? In the leaching process, you can observe alumina when dissolved in sodium hydroxide, you will get sodium meta-aluminate. This is the reaction involved in the leaching process. And Cu2O plus Cu2S is giving 6Cu plus SO2. This is nothing but self-reduction process. And PbS plus 3O2 is giving PbO plus SO2. ये roasting है, it is roasting process. And Cr2O3 plus aluminum is giving Al2O3 plus Cr, it is thermite process.
सो इसमें लीचिंग प्रोसेस कौन सा है, ये वाले ही लीचिंग प्रोसेस है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनिया को डिसॉल्व करके इम्प्यूरिटीज को फिल्टर करके रिमूव करेंगे। इसमें रेड बॉक्साइट एंड वाइट बॉक्साइट, इसमें रेड बॉक्साइट को हाल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस में ये प्यूरिफिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आई मीन लीचिंग प्रोसेस से इसके इम्प्यूरिटीज रिमूव करके कंसंट्रेशन करेंगे ये बॉक्साइट ओर को। ओके बच्चों, दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चंस गिवन इन दिस पेपर। थैंक यू।